there, I now want to bring in another special guest on the show. As tributes continue to pour in, we now want to talk to you about an India Connect. India and the royal family's connect is decades old. In 2005, a few of Mumbai's famous Dabbawalas were the Queen's special guests at the royal wedding of Prince Charles and Camilla, now King Charles III. But their royal connect doesn't end there. In 2016, Dabbawalas of Mumbai went out shopping to buy special gifts for Prince William and Kate Middleton, who were in the city on a short visit. Sopan Mare was one of those Dabbawala who, from Mumbai, then travelled all the way to the United Kingdom and, in fact, had a couple of meals and met the Queen as well. He, in fact, is now joining us on the broadcast. Sopan जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. बताइए हमारे दर्शकों को कैसा समय था वो, कैसा आपका एक्सपीरियंस था जब आप गए यूनाइटेड किंगडम, और आपकी मुलाकात के बारे में बताइए. हम बम्बई का वो इंडिया में बम्बई का डब्बा वाला हमें निमंत्रित किया था. वो प्रिंस चार्ल्स का जब शादी वो 8 अप्रैल 2008 में था, जब भी हम लोग को बुलाया था तो बकिंगहम पैलेस में जो शादी हो गया, वो शादी का दौरान वो यलिदा बेन भी या सब राजा का परिवार में हम बॉम्बे का 2 टिफिन डब्बे वाला और जयपुर की रानी पद्मिनी देवी, भारत से 3 लोग, और ये ट्रांसलेट करता था पद्मिनी देवी जी. और वो यलिदा बेन जो था अभी उसको आज 96 में उम्र में भगवान ने बुलाया. तो भगवान ने बोला हमें डब्बे वाले को भी सारा परिवार वो भारत देश में पूरा ये दुख है, वो दुख ही है. लेकिन शादी का टाइम जो हम बकिंगहम पैलेस में गया तो राजा का परिवार में ताई के साथ हमारा बहुत मुलाकात हो गया. आधा घंटा कम से कम डांस हो गया वो शादी में. बहुत वो आनंद क्षण था राजा का जो शादी हो गया कैमिला पार्कर के साथ. जब जी, भाषा कैसे मैनेज करी दोनों साइड्स ने, और आपकी बातचीत क्या हुई क्वीन से? नहीं, बातचीत तो हम हिंदी में बात करता था, और ये जयपुर की जो रानी है वो परिवार से जोड़ा था. लेकिन हम भी वो परिवार का साथ में वो 11-12 लोग था, और हम भारत देश का 3 ऐसा 14-15 लोग. बकिंगहम पैलेस में जब भी शादी हो गया राजा का, प्रिंस चार्ल्स का, जब भी वो मुलाकात करने का टाइम ये सब अनुभव हम लोग को पूछता था कैसा लगता है, क्या होता है. तो हम बोला कि बहुत आनंद है या ये हम जो शादी में हम लोग को बुलाया कि हम बॉम्बे का टिफिन वाला भारत देश में अभी 1.25 करोड़ जनता से 3 लोग को छीन के बुलाया शादी में, तो हम बहुत आनंदित उस टाइम रह गया. जी, टिफिन सर्विस के बारे में उन्होंने आपसे पूछा कि कैसे मुंबई में चलता है ऐसे सिस्टम? राजा जब भी 2003 में नवंबर में 2003 में बॉम्बे भारत देश का दौरान आया था, तो दिल्ली में पहुंच गया. तो हमारा इधर उसका ऑफिस से आदमी आया और बोला वो डब्बे वाले को राजा जो प्रिंस चार्ल्स है तो उसका माता विक्टोरिया उसका नाम, तो विक्टोरिया टर्मिनस बोरीमेंदर जो रेलवे स्टेशन बॉम्बे में होता है सबसे बड़ा स्टेशन, वो यहाँ मिलने आया. तो हमारा डब्बे वाले का प्रशंसा किया. तो चर्ची गेट ये रेलवे का स्टेशन का बाहर हमने राजा को 11:15 बजे बुलाया. हम लोग को भी बहुत लाख लोग को जो खाना पहुंचाने का टाइम लंच टाइम जो 12 का होता है, हमें टाइमिंग दिया कि 11:15 बजे जो नहीं आएगा तो हमारा जो ग्राहक है वो हमारा दैवत है. उन्होंने आपके लिए समय निकाला, एक बार नहीं बल्कि 2 बार जैसे आप बता रहे हैं. सपन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. So there you heard from one of the famous Dabbawalas in Mumbai who in fact had travelled to the United Kingdom to meet the Queen. Well, before we go, we also want to play out this report by CNN's Mandy Gaither on the extraordinary life of Queen Elizabeth II. Thanks a lot for watching. December 1936. A great country of the world. The moment that forever changed a young girl's life. After ruling less than a year, King Edward VIII abdicated the throne to his brother. A new reign began in Britain as the Duke of York was crowned King George VI. The new king's eldest daughter, then Princess Elizabeth, known as Lilibet to family, became next in line to the throne. 11 years later, marked a marriage. Princess Elizabeth married Philip, the present Duke of Edinburgh. The
couple was in Kenya on a Commonwealth tour in place of an ill King George when the 25-year-old princess got news that changed the path of her life. The shadow of death hovered over King George of England as these last pictures were made. Her father's reign lasted 15 years. Once a princess, suddenly a queen. The hopes and hearts of England and the Commonwealth went out to a young queen. In 1953, Queen Elizabeth II was crowned. Her husband, who was later granted the title of His Royal Highness, the Prince Philip, Duke of Edinburgh, was the first peer to pay his respects at the coronation, the first one to be broadcasted live on television. A story of a queen who wrote bright pages in the story of the year. In the years that followed, during times of great social change, the Queen kept a busy schedule, traveling across the globe more widely than any other monarch before her, meeting with just about every U.S. president since being crowned. She remembers learning from her parents how important keeping America on side was during the war, and then America came into the war. She remembers that so well. She remembers, the American troops, D-Day, all that. To her, it's a very important part of her growing up. With no official political power, the Queen wielded the influence of a figurehead. In her private life, things weren't always easy. The year of her 40th anniversary on the throne marred by separation, divorce, and estrangement in her children's marriages, and a fire at Windsor Castle. It has turned out to be an annus horribilis. Then, in 1997, the death of the People's Princess. Through a great deal of heartache, the Queen stayed true to her greatest passions, horses and dogs, balanced with the joy of her grandchildren and later a new role of great-grandmother. But even that at times brought hardships. At the beginning of 2020, Buckingham Palace announced that Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, were no longer working members of the royal family. Through it all, Prince Philip was, in the Queen's words, the strength and stay of her reign. He died in 2021 before his 100th birthday after more than 70 years of marriage. It's been one of the great royal romances, I think, of history. From a girl who was third in line to the throne to the longest-serving British monarch, Queen Elizabeth II leaves behind a legacy, a life full of family, faith, and devotion to country.